धाती दागे ना ता ताती दागे ना ता ताती नकत धा धाती दागे ना धान दा तिन्ना धान दा तिन्ना धान दा तिन्ना दागे ते तिना ना दागे ते तिना ना धाती धा दा दाती धा धा दाती. The world wants to know what is happening in Ayodhya. How much of the construction work is over? How much of it remains? What all is in store for pilgrims who will come to Ayodhya from all over the world? And to tell you all, we will have with us Mr. Nipender Mishra, virtually from the horse's mouth, who will tell us exactly what has happened and what is going to happen in future. And to hear it from a person who actually matters the most as far as the construction of this temple is concerned, we are privileged to have with us Mr. Nipender Mishra ji. He is the chairman of the Temple Construction Committee and he was also the principal secretary to the Prime Minister Shri Narendra Modi ji before he took on this role. It is indeed an honor and privilege for us to be here and be shown around the place by Shri Mishra ji. Thank you so much for being with us. Thank you. पहुंचे कहाँ है कंस्ट्रक्शन में अभी तक हम? Biggest challenge of this place, which we faced, was the foundation. As a result of soil testing, it was evidently cleared that we may go for pile foundation, which we did. But after initial testing, the data which came to us of the pile testing, it was very clear that perhaps we have to excavate the entire soil. So you can well imagine this 2 acre of land which we have got all. We had to dig out. How much? 15 meters deep. 15 meters, huh? 15 Don't meters. make it's not feet. It's almost yeah, it's a 3-story building. Yeah. And the entire soil was taken out. The biggest challenge was then that it had to be done before monsoon. Fortunately, we could do that. If you had visited then, you would have seen that there is a big size well which has been created. We had to fill that with fresh soil, what is called engineered soil. Okay. Engineered soil is which makes after settlement converts itself into a rock. Okay. Okay. So the foundation, in order to have a rock foundation, we did the engineered soil, filled it, and that filling required compaction. That filling required testing of each of the how much of strength it has in it. Anyway, we succeeded. As you know, the constructing agency is a well-known agency called Larsen and Toubro, and our project monitoring is being done by Tata Consultant Engineers. After having done about 15 meters of foundation, the kind of advice that was received to us, we have a committee. The committee has got representatives from 5 IITs. IIT Madras is there, then we have IIT Delhi, then IIT Surat, IIT Kanpur, IIT like institution in Hyderabad. So all of them joined along with the experts of L&T and TCE, and they decide and make the recommendation on any issue which comes up. पूरे निर्माण में लोहा इस्तेमाल नहीं होगा. बिल्कुल बिल्कुल लोहा नहीं है. लोहा क्यों नहीं होगा? तो लोहा 2 कारण बताए गए, लेकिन दोनों बताऊंगा. एक तो ये कि लोगों ने कहा एंशिएंट टेम्पल में लोहा नहीं बना, लेकिन सही बात यह है कि लोहा इसलिए
एंशियंट टेम्पल में नहीं था क्योंकि लोहा बना नहीं था तब। बना नहीं था तब, हाँ। लोहा की डिस्कवरी नहीं हुई। बिल्कुल, हाँ जी। तो अब प्रश्न ये है कि क्या आप सीमेंट नहीं इस्तेमाल करेंगे या कि लोहा नहीं इस्तेमाल करेंगे? तो करेंगे कैसे? तो ये हुआ कि लोहा नहीं होगा, तो वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस टेम्पल विदाउट लोहा। So after the pile, the issue was that what should be the material used for raft foundation, because after the foundation the raft came up. This is the Yeah, raft. yeah, you are standing, this is the raft. There is always an opinion that the temple must not be less than, construction should be such, it should not be less than 1,000 years life. So the whole challenge was you must have specifications which will have 1,000 years. After that, the plinth structure came, and which is at this point, so that will answer your question, where are you in terms of the Right. temple construction. This now is 5.5 meter. तो ये किसका बने? तो ये हुआ कि साहब सबसे मजबूत पत्थर क्या होता है? तो ये तय हुआ कि ग्रेनाइट सबसे मजबूत पत्थर का सबसे मजबूत पत्थर। तो ग्रेनाइट के पत्थर के लिए फिर हमको साउथ इंडिया से ग्रेनाइट लाना पड़ रहा है। हाँ, कर्नाटका से आ रहा है। तो कर्नाटका से इस समय और 17,000 स्लैब हमको मंगाने हैं। उसके लिए ट्रक उतने नहीं मिल रहे थे, ट्रेन में आने होंगे। तो फिर हमको कंटेनर कारपोरेशन से व्यवस्था करनी पड़ी, एंड दे वर वेरी काइंड, दे वर वेरी वेरी काइंड। Green channel was given to us, so it could be delivered from south to Kanpur in 3 days, and from Kanpur it came by their trailer and got delivered. Yeah, here. these here, So I all can see this them. that you see is the granite that we have got. जब ये आ गया तो फिर समस्या हुई कि इसमें जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं, जिसकी जो ड्राइंग और डिज़ाइन है, वो इस प्रकार से इसमें होल्स बनाने होते हैं जो आपको दिख रहे हैं कि ये होल्स इस प्रकार हों कि वाइल दे विल फिक्स टू ईच अदर, एट द सेम टाइम इसमें इनफ रेजिलियंस होना चाहिए, ये जो है। तो इसके लिए रेजिलियंस के लिए एक साइज के होल बनाने थे, क्योंकि अर्थक्वेक आ जाए तो क्या होगा, 500 साल में अर्थक्वेक आए। तो वी हैव इवन एस्टिमेटेड कि यहाँ पर 500 साल में अर्थक्वेक के क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो उस हिसाब से उनके रिकमेंडेशन पे, और कौन कर रहा है ये रिकमेंडेशन, इसके लिए हम लोगों ने 2 इंस्टीट्यूट चुने। एक तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, राइट, जो सेंट्रल हमारी एजेंसी है, और एक जियो फिजिकल स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल रिसर्च लैब है जो हैदराबाद में, जो इसके पूरे स्टडी को करते हैं। उनकी राय से फिर ये हम लोगों ने बनाया। So when you say it can withstand an earthquake, do they say to what Richter scale can it take? They have studied all the records from Nepal to another about 500 kilometers from here, and whatever has been the maximum and the minimum, उसका it can take care of not only that, let us say it is double of the Richter scale on which the anything has happened earthquakes historically. came. Yeah, it can withstand. it can withstand. So it's indestructible in a way. We would like to think that. Let me tell you that this kind of a thing you have to put 7 layers. 7 layers, yes. So up to 3rd layer we have reached that. तो we जी see हाँ, वहाँ जहाँ जो झंडे के पास झंडा में है, भगवान राम जी के, वो हाँ, भगवान जी के जन्म स्थान का है। वहीं पर जो है
वो प्रधानमंत्री जी ने पूजा की थी, राइट राइट। तो वहाँ पर जो है हमने 3 लेयर डाला है, हमको वो 7 लेयर तक ले जाना है। और 7 लेयर जब डल जाएगा तब जाकर के उसके ऊपर फिर बंसी पहाड़, राजस्थान का स्टोन है, वो उस पर स्ट्रक्चर आएगा जिसको आप कहते हैं गर्भगृह बनना शुरू होगा। ओके ओके। वही हम लोगों ने आप सभी के साथ शेयर किया है न्यूज़ और अपने श्रद्धालु डिवोटीज के साथ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 2023 दिसंबर में गर्भगृह बन जाए और यदि हमारे भगवान वहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ आ जाए, people can file across, और प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो लोग फिर दूर से दर्शन कर सकेंगे। So our best attempt is that by December 2023 we may be able to complete the ground floor of the Garbhagriha. Of course, it has to be, there are 5 मंडप हैं उसमें, which then goes up to the east. तो वो 5 मंडप ग्राउंड फ्लोर पे बने, फिर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बने और फिर सेकंड फ्लोर बने जिसके 3 मंडप और 2 मंडप होंगे। तो उन सबको मिला करके मेन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन होगा। You just have 1.5 years before that. Yes. So now you can imagine what kind of work is left. I can perhaps predict, it is not good to commit, but I would predict that by end of 2024, all the floors may be complete. The inner carvings would still be done because, you know, iconography will continue.